Assalamualaikum viewers, hello and welcome to another lecture of Tenses Made Easy. Today we are going to discuss the rules of present indefinite tense. As a recap, let's recall that tenses demonstrates the time of an action and verbs are of paramount importance and they change according to the time of an action. And present indefinite tense, it is one of the it is also called as present simple tense. We will be discussing its other structures as well, but its main structure is subject plus first form of verb plus object. This is the simple. We also call this present simple, but when be verbs, we will come later to that. When be verbs act as the main verb in a sentence, so this structure does not hold like this. It is changed then, right? So it will be discussed later on, but first let's come to the main structure of present indefinite tense. First, here are a few examples. Before coming to examples, I would like to discuss the structure of this tense. That is subject plus present form of the verb, which we also call first form of the verb, and then object. So this is the main structure. Okay, so now coming to the examples, please focus on the subject as we are discussing these examples. So focus on these subjects. First subject is he. So he plays cricket. Now as the subject is he, so we have added s to the verb. Then coming to the next sentence, she gets up early. It cleans the surface, right? Sarah washes her hands frequently. Now if you look at this subject, he, she, it and a singular name. So we have added s here to the verb. Whenever there is these pronouns are there in the subject, so we have to add an s to the verb. It cleans the surface. He, she, it or singular noun. It's very simple to remember that we have to add an s to the verb when we have these things or these pronouns in the subject of a sentence in present indefinite or present simple tense, right? So coming now towards negative and interrogative sentences. Before moving on, let's discuss that there is no helping verb. There is only main verb in this structure of the present indefinite tense. There is no helping verb. So how to make negative and interrogative sentences? Let me explain in Urdu as well. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये स्ट्रक्चर है जिसमें पहले सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है. बिफोर कमिंग टू द एग्जाम्पल पे आने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जब ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हो, ये प्रोनाउंस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट भी हम कह सकते हैं. जब ये हमारे पास सब्जेक्ट्स में आ जाए तो यहाँ पे वर्ब के साथ हमने एस या ई एस ऐड करना है. एस और ई एस यहाँ पे तो सिर्फ हमने एस वाले एग्जाम्पल लिखे हैं. इससे आगे हम इंशाल्लाह लेटर ऑन वी विल डिस्कस ई एस एग्जाम्पल्स एज वेल. यहाँ पे ही, शी, इट एज सब्जेक्ट्स आए हैं तो आपने क्या करना है, वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करना है. और इसके अलावा ये याद रखिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट, ठीक है, इसको प्रेजेंट भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं. तो स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसके अलावा हमने ये देखना है कि इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं हमने, बिकॉज देयर आर नो हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस. तो कैसे हम उसको बनाएंगे, लेट्स मूव ऑन टू दैट. Okay, we discussed when to add s
to a verb when there is these pronouns in the subject, he, she, it, or singular noun or singular subject. So now we will discuss that when to add es to a verb when there are third person singular in the subject, or he, she, it, or a singular noun in the subject. So all those verbs which end in sh, ch, o, and x, they will take es, and the rest will take s. When there are verbs, हमने डिस्कस किया कि जब s लगानी है वर्ब के साथ तो कुछ ऐसे वर्ब है जिनके साथ हमने es लगानी है. तो कौन कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हमने es ऐड करना है? वो है sh, ch, o, x. तो यहाँ पे है fix, एक वर्ब है, इसके साथ हमने es लगाया है. उसके अलावा यहाँ पे ch है, इसके साथ हमने es लगाया है. He goes to school on foot. अब यहाँ पे o है तो इसके साथ हमने es ऐड किया. नेक्स्ट है sh वाला वर्ब है, तो इसके साथ जो एंड में जिस वर्ब के एंड में sh आता है तो इसके साथ भी हम es ऐड करेंगे, राइट? ओके, so now we will move on to negative and interrogative sentences of this tense. As I have discussed its technical uses in my previous video, please watch that video before coming to this lecture, because I have discussed all the technical uses of this tense. अगर आपको technical uses नहीं आते present indefinite tense की, so it will not help you. Rules सीखने से आप इसको बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते. Thank you for watching, and in my next video I will be discussing the negative and interrogative sentences of present indefinite tense.